Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our English reader book by Vani publishers, and the name of the book is English Reader Hindi Anuvad Sahit Class 3. Now we will start chapter number 15 and name of the chapter is Our Festivals, Hamare Tyohar. We have many festivals in our large country. Some of these are of the Hindu and some of the Muslim. Some are of Sikhs and some of the Christians. The two great festivals of the Hindus are Diwali and Holi. Diwali is the festival of light. It comes after the rain. People clean their houses and light lamps to welcome the goddess Lakshmi. Holi comes after the winter season. It is the festival of colors. People throw colored water and colored powder on one another. He joke and laugh and sing and dance and enjoy themselves. The two great festivals of the Muslims are Eid and Muharram. They have two Eids, Eid ul-Fitr and Eid ul-Zuha. On both these days, they put on new clothes and go to Eidgah for prayers. Then they visit to their friends. Muharram is their day of sorrow. On this day, they remember their holy men. The Sikh take part in all the festivals of Hindus. They also have some festival of their own. These are Baisakhi and the birthdays of their two holy men, Guru Nanak Deva and Guru Gobind Singh. Christmas is the most important festival of Christians. It falls on 25th December, the birthday of Jesus Christ. On this day, they assemble in their churches for prayers. Then they come back to their houses and make merry. There are parties and dances and they give presents to their friends and dear ones. We now have two new festivals. The first is our Independence Day. It falls on 15th August every year. This is the date on which in the year 1947 we became free. The second is our Republic Day. It falls on 26th January every year. These are the festivals of all Indians. तो जो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे है, ये नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो सभी इंडियंस मनाते हैं, और बाकी जो फेस्टिवल्स हैं वो अलग अलग रिलीजियस के लोग मनाते हैं, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। तो चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद समझाती हूँ आपको। हमारे बड़े देश में कई त्योहार होते हैं, कुछ हिंदुओं के और कुछ मुसलमानों के होते हैं, कुछ सिखों के और कुछ ईसाइयों के होते हैं। हिंदुओं के दो महान त्योहार हैं, होली और दिवाली। दीपावली प्रकाश का त्योहार होता है, यह वर्षा के बाद आता है। देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए लोग अपने घरों को साफ करते हैं और दिए जलाते हैं। होली शीत ऋतु के बाद आती है, यह रंगों का त्योहार है। लोग एक दूसरे पर रंग बिरंगे पानी और रंग डालते हैं, वह एक दूसरे से मजाक करते हैं, हंसते हैं और गाना गाते हुए नृत्य करते हैं। मुसलमानों के दो महान त्योहार ईद और मुहर्रम होते हैं। इनके दो ईद, ईद उल फितर और ईद उल जुहा होता है। इन दोनों दिनों पर ये नए कपड़े पहनकर ईदगाह पर प्रार्थना करने जाते हैं, फिर ये अपने दोस्तों के घर आते हैं। मुहर्रम शोक का दिन है, यह अपने पवित्र व्यक्ति को याद करते हैं। सिख हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेते हैं। इनके बैसाखी और पवित्र व्यक्ति गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिन होते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का मुख्य त्योहार होता है। यह ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में 25 दिसंबर को आता है। इस दिन ये गिरजाघरों में प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। उसके बाद ये अपने घर आकर उल्लास मनाते हैं। ये सब दावत और नृत्य करते हैं और अपने प्रियजनों और दोस्तों को तोहफे देते हैं।
हमारे 2 नए त्योहार भी होते हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस, यह प्रतिवर्ष 15 अगस्त को आता है। यह वह दिनांक है जब वर्ष 1947 में हम आज़ाद हुए थे। दूसरा हमारा गणतंत्र दिवस है, यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को आता है। यह सभी भारतीयों के त्योहार है। नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज। चलिए कुछ अभ्यास करते हैं। एक्सरसाइज 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माय डियर किड्स, एक्सरसाइज 1 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। Now we will start exercise 2, complete the sentences. वाक्यों को पूरा कीजिए। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, चलिए उनकी सहायता से हम सेंटेंसेस को पूरा करते हैं। नंबर ए, all the children dash in the hall for daily prayer। तो यहाँ आएगा assemble, इकट्ठा होते हैं। Christmas is the most important dash of Christians। तो यहाँ है फेस्टिवल्स, क्रिश्चियंस का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। कौन सा? क्रिसमस। वाराणसी इज द डैश प्लेस ऑफ द हिंदूज। तो यहाँ आएगा होली प्लेस। चिल्ड्रन डैश द फेस्टिवल्स ऑफ दिवाली। तो यहाँ है एंजॉय। वी शुड लर्न टू कीप आवरसेल्फ एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्न वाक्यों को पूरा कीजिए। होली इज आवर फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इट कम्स आफ्टर, किसके बाद आती है ये? विंटर्स के बाद आती है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। Rest of the part you have to do by yourself. My dear kids, rest exercises you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.